हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, आज जो हम वीडियो कर रहे हैं उसका टाइटल है एंशिएंट टेम्पल्स आर मशीन्स विद मूविंग पार्ट्स। अमेजिंग। एंशिएंट टेम्पल्स आर मशीन्स विद मूविंग पार्ट्स। तो ये तो वीडियो देख के ही मुझे पता चलेगा, वैसे आइडिया नहीं हो रहा क्योंकि मैंने इस एंगल से कभी सोचा ही नहीं है। हो सकता है सोचा हो पर इनका मीनिंग अभी समझ नहीं आया, तो ये तो वीडियो देख के पता चलेगा। पर टाइटल कमाल का है। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे जो सब्सक्राइब का बटन है उसको सबसे पहले आप क्लिक कर लो, और उसके बाद जो साथ में नोटिफिकेशन है, घंटी है, उसको भी क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस जैसे हम अपलोड करें उनके नोटिफिकेशन मिल जाएं। और वीडियो देखने के बाद अगर पसंद आए तो कर देना लाइक और शेयर करना ये वीडियो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो चलो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। Hey guys, ancient temples in India have moving parts. You may not believe me. Watch this. Oh, Yes, this is a column made of stone in a temple in India. Normally, you will not even think of trying to touch or rotate this stone block, but someone accidentally discovered or rediscovered that it could be rotated. What could possibly be the reason to have something like this installed in a temple? To set up something like this, there has to be a rotating mechanism, and it's not easy to set this up in stone because you cannot open it afterwards and put lubricant inside. To have a rotating mechanism made of stone, you need to have advanced knowledge in engineering. No, this is not the only temple with moving parts. Look at this one. oh, bell, kind of a bell. Here's a column which has small holes through which you can insert your finger. Inside, there is a ball, a stone ball, and you can move it up and down. Of course, you cannot pull the ball out through these tiny holes. You can only move it inside the hollow column. How was the ball put inside in the first place? If you claim this is carved, how did they manage to scoop out the rock which was inside through these small holes? That's okay. There's another ancient temple in a place called Uttarakosamangai. This is at least 1,200 years old. There is a ball inside a lion's mouth. You can roll the ball, you can rotate it, but you cannot pull it out of the lion's mouth. Okay. What's more bizarre? The lion is made of solid granite, but the ball inside is made of a type of rock called onyx. So how is this ball put inside the lion's mouth? And why are we not able to pull this ball out? More and more young people are becoming interested in Indian temples, and they're sending me incredible videos to my email. Here's a snake's mouth wide open, and the mouth is held open because Lord Vishnu's conch shell is placed between its upper and lower jaw. But you can rotate this conch. It spins very well, much better than some modern rotating devices. But the real question is, why were these moving parts set up in temples? Some say that if you move these parts in a certain rhythm, in a certain order, or a certain speed, secret chambers can be opened which are hiding in plain sight. Wow. Now, what do I mean by this? Let's look at this one. This is a safe box to keep money, and boxes like these were used in India for many centuries. There's a type of safe used by a group called Chettiars. They have mastered the art of safe making. It is so complex, it's uncrackable even today unless you know which knobs to turn in which order to open the safe. In fact, when a normal person looks at this for the first time, he will not even realize that this is a safe that can be opened. He will just think this is a decorative piece made of solid metal. But now, look at this ceiling in an ancient temple in a place called Vetuan Koil.
This is made of stone, and of course, it has these fabulous and complex patterns of the 9 influencers called Navagraha and 12 zodiac signs and other features of astrology. But look at this area in the center. This is a doorknob, which means you can open this. This is also a very ancient temple, and because of time, you can now see the gaps between the door and the rest of the chamber. And look at these protruding circular knobs. I believe that if you rotate them in a particular pattern, just like the metal safe you saw, you can open the secret chamber in the ceiling of this temple. Wow. I mean, clearly, this is a door which leads to something. In ancient Indian temples, there are many, many mysteries hidden in plain sight. Amazing. We have not even started to understand them. Now, let's look at one of the most iconic megalithic structures in the World Heritage Site of Hampi. This is a gigantic stone chariot standing about 15 feet tall and 10 feet wide and weighs more than 120 tons. It is so awe-inspiring, it's even printed on Indian money. Oh, even by conservative archaeological accounts, it was built at least 500 years ago. But in spite of being very popular among tourists, this chariot remains shrouded in mystery. Google and Wikipedia give blatantly false information. For example, Google calls this a monolithic chariot. If you examine this structure, you realize it's not monolithic at all. It is not made of one stone. Look at how each wheel is made of a separate stone block and they're set up on the axles like a real working chariot. The chariot appears to be not built as a decorative or religious structure. Rather, it is built like a real vehicle made of several parts which are assembled together. I know this is a weird question to ask, but is it possible that this chariot has moving parts? When I examined the wheels and axles, I found exactly what I was looking for. You see these marks? These are caused by friction. When something moves, two pieces rub against each other. These marks are created because of wear and tear. This is clear proof that these wheels rotated. The wheels rubbed against the quote-unquote mud guards, just like what you would find in a modern-day vehicle. But today, we're not able to rotate the wheels. Why? A quick internet search showed me that visitors kept moving the wheels and damaged them in 2011. So the authorities now put concrete at the base of the wheels and made them immovable. But why were the wheels originally designed for rotation? To move the entire 120-ton chariot? No, these wheels cannot handle such a weight. Locals say that every year on a certain date, the main idol of this temple would be placed inside this chariot. And when people rotated the wheels in a certain speed, the dark chamber inside the chariot would brighten up and illuminate the idol. Wow. Of course, this sounds like magic, but magic is just another name for advanced technology. Are we talking about a glowing light source here? More specifically, are we talking about an ancient dynamo mechanism? Today, we can spin a wheel and can light up a light bulb. We generate electricity by spinning a wheel. This is a simple electric generator we use even when pedaling a bicycle. Were ancient Indian builders using electricity the same way? Why else would they painstakingly create these rotatable wheels on this giant chariot? The simple answer is they knew how to convert one form of energy into another form. They were converting kinetic energy into
electrical power. Could this be why we're able to find so many movable parts in ancient Indian temples? Were they meant to be moved so they could create electricity or some other type of power, which was then used for constructive purposes? But is it possible that ancient builders were not only using human energy, but also wind energy in temples? Of course, this is a crazy idea. All these moving parts I showed you are made of stone, and stones are just too heavy to be moved by wind, right? But see, ancient builders were much more advanced than us. They could make stones movable even by wind. In some Indian temples, you can see these chains moving even with the slightest breeze. But these chains are made of stone, they're not made of metal. Ancient builders have cleverly designed them to be hanging from the ceilings of temples. These chains you're looking at were created more than 700 years ago. But what is the purpose of them? As usual, experts think these are merely for decorative purposes. However, others say that once upon a time, small transparent crystals were placed at the end. Look at the holder-like design at the bottom. And if the wind reached a certain speed, these chains would oscillate faster and the crystals would light up like light bulbs. Oh. Does this remind you of any technology we use today? कौन सी है? So, what do you think? Why were these moving parts installed in ancient Indian temples? Were they meaningless creations just for decoration? Or were ancient builders harnessing and converting energy? तो फ्रेंड्स, वीडियो तो कमाल का था. मतलब इतनी शॉकिंग इंफॉर्मेशन दी कि कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता. अब तो कभी भी टेम्पलों में जाएंगे जो पुराने हैं तो यही देखते रहेंगे, यहाँ पे कोई ऐसी चीज तो नहीं है जो हम सोचते हैं ऐसी डेकोरेटिव और उसमें एक्चुअली में कुछ इस टाइप की कोई हिडन थिंग मतलब उसके अंदर है. तो जैसे उन्होंने दिखाया वो चेन, तो मैं तो कहते ऐसी डेकोरेशन के लिए की होगी, पर वो उन्होंने कहा नहीं, उसके अंदर तुमको कोई स्टोन टाइप या कुछ वो डालते हैं और उससे फिर वो पर्टिकुलर स्पीड जब विंड की होगी तो वो लाइट अप होगा. वो तो अमेजिंग है. और वो चैरियट का जो बोला कि आप व्हील को घुमाओ, तो जब व्हील को घुमाओगे एक पर्टिकुलर स्पीड में तो अंदर लाइट जनरेट होती है और उससे जब वो भगवान की मूर्ति लगा रखते हैं तो वो लाइटेड अप होती है. अमेजिंग अमेजिंग. और अगर उस टाइम इतनी टेक्नोलॉजी थी, हैरानी की बात है, कितने एडवांस थे. फिर मतलब फिर से जीरो से स्टार्ट किया लगता है हम लोगों ने. तो वो भी बड़ी अजीब बात है कि क्यों भाई जीरो से स्टार्ट करना पड़ा. तो काफी अमेजिंग अमेजिंग चीजें इन्होंने बताई हैं जो देख के ऐसे लग रहा था अरे बाप रे, ये तो क्या है, ये तो मतलब ये तो ऐसे लग रहा है जैसे आउट ऑफ द वर्ल्ड कोई इंफॉर्मेशन मिल रही है तुमको. जैसे आपको लगता है ना कि आप स्पेस में जाके आपने कोई नए लिविंग बीइंग्स या कुछ इस टाइप से फाइंड कर लिए, वो तो ऐसे लग रहा है यहाँ पे इतनी अमेजिंग अमेजिंग इंफॉर्मेशन मिल रही है. तो वीडियो तो वाकई कमाल का था. बहुत बढ़िया वीडियो था. और जी इसमें यही हमने पहले भी ऐसे कुछ वीडियोस बनाए हैं. हाँ, एक दो हमने किए हैं. इन्हीं के शायद हाँ. इनका भी एक किया था. और पॉइंट यही था कि पहले जो एंशियंट बीइंग्स थे वो बहुत इंटेलिजेंट थे, हमसे इस वक्त से भी बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट थे. उनके पास ऐसी टेक्नोलॉजी थी जो अभी तक हमारे पास नहीं आई है. जिस तरीके से उन्होंने चीज़ें बनाई उसका पर्पस था और उसका यही था कि वो क्यों बना के गए किसी को पता नहीं. तो उसकी बहुत स्टडी करनी भी बाकी है, मगर ये डेफिनेटली ये इतना प्रूव ज़रूर होता है कि हमसे पहले कुछ एंशियंट्स थे जो बहुत नॉलेजेबल थे, जिसको कुछ लोग एलियंस भी कह सकते हैं. कि मगर कोई ऐसी सिविलाइजेशन थी जो बहुत एडवांस थी और उसके बाद कुछ ऐसा हुआ है कि कुछ रीसेट हुआ है और दोबारा से सब चीज़ें शुरू हुई हैं. तो कुछ हुआ है हमें पता नहीं,
मगर ये अच्छी बात थी कि जनरेटर था। और काफ़ी टेक्निक्स भी हैं, जैसे वो दिखा रहे हैं शंख जो बीच में है, तो डेफिनेटली कोई पहले नीचे का स्टोन पार्ट कर सकता है, शंख लगा सकता है, ऊपर का स्टोन पार्ट कर सकता है, पीछे से जॉइन कर सकता है। अभी हमें पता नहीं कोई जॉइनिंग टेक्निक उनके पास होगी, या फिर उनका ऐसा मटेरियल होगा कि वो रॉक ही फॉर्म कर सकते हैं या जिस तरीके से, या उनके पास ऐसी ताकत थी कि बस ऐसे किया, लेजर लाइट गई और उस लेजर लाइट को जहां भी डायरेक्ट किया वहां से वो जो है स्टोन अगर हट गया तो फिर उसके बाद अंदर दूसरा स्टोन जाएगा, फिर उनके पास इतनी टेक्नोलॉजी है कि स्टोन को वापस लाएं। मुझे नहीं पता। तो मतलब पॉइंट ये है कि उनके पास इतनी एबिलिटी थी कि तो वो थी, बनाया स्टोन तो है। हो सकता है क्रिएट कर सकते थे, वो जैसे लकड़ी करते हैं वैसे स्टोन क्रिएट कर सकते थे, या फिर उनके जॉइनिंग टेक्निक्स थी कि डिफरेंट पार्ट्स जॉइन कर दिया, आपको पता भी नहीं चल रहा कहाँ से जॉइन है। और तो काफी बहुत डिफिकल्ट है स्टोन पे, कोई और मटेरियल हो ना जिसको अच्छी इजी, जैसे लकड़ी होती है। हाँ, लकड़ी को तो आप फिर भी काम कर सकते, स्टोन पे करना तो और भी मुश्किल है। तो वो ऐसी सिविलाइजेशन थी जो चाहती थी कि ऐसी परमानेंट चीज बनाए जो हजारों साल तक सरवाइव करे, आने वाले लोग देखें और कहें वाह क्या बढ़िया चीज है। तो वही है ना कि मतलब ऐसी चीज बनाई है जिनको पता था कि सरवाइव करेगी। और वो लॉक्स वाली नहीं याद, कितना कमाल के लॉक दिखाए हैं वो दरवाजे में, यूं पता नहीं कितने कॉम्प्लिकेटेड थे। और फिर वो दिखाया कि एक और दिखाया जिसमें आप उसको करो तो हाँ, तो पहले तो वो मॉडर्न लॉक दिखा रहे थे जिसमें चाबियां जाए, वहां पे कोई बंदा जो है वो ट्राई कर रहा था चाबियों से, मगर उन्होंने कहा था कि जिस टाइप के वो लॉक्स हैं वो मंदिरों में भी बने हुए हैं। और अभी किसी ने रिसर्च नहीं की, जो बाहर निकले हुए हैं उस पर कुछ करिए, रिसर्च करिए, तो लोगों को रिसर्च करनी है। मगर डेफिनेटली कोई ऐसी थी सिविलाइजेशन जो बहुत ही पावरफुल थी और उसने लॉन्ग टर्म के लिए ऐसे महान टेम्पल्स बनाए हैं, अपनी क्या बोलते हैं लेगेसी छोड़ के जा रहे हैं दूसरों को, कि दूसरे लोग आए ऑब्जर्व करें और देखें ग्रेटनेस। सच में फ्रेंड्स, सोच के ये देख के ही ना दिमाग जो है ना घूम गया मेरा, तो इतना कंफ्यूज हो चुका है कि भैया ये कैसे पॉसिबल है, कैसे हुआ होगा, क्या हुआ होगा। तो इनकी वीडियोस होती तो कमाल की हैं, काफी टाइम बाद देखिए, एक दो देखी थी पहले, अब काफी टाइम के बाद देखिए और करनी चाहिए, क्योंकि काफी इंफॉर्मेटिव होती है और काफी आपको सोचने को मजबूर करती है, और एक आपके अंदर ना वो वाव लेके आती है कि अरे वाव ये हुआ है, अच्छा ये भी है यार, हमने तो पता ही नहीं था। तो फ्रेंड्स, आशा करते हैं आपको भी अच्छा लगा होगा, मजा आया होगा ये वीडियो देखने में। और चलो बैठ के अब सोचते हैं ये कैसे पॉसिबल हुआ, और अगर आंसर मिले तो जरूर कमेंट सेक्शन में लिखना। तो चलते हैं फ्रेंड्स, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जल्दी। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।